हरप्रीत और मैं संध्या। सत्र 2024-25 के डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी के समाचार बुलेटिन के पहले अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सत्र के पहले 2 माह की विभिन्न गतिविधियों से हम आपको परिचित करवाएंगे। सत्र के पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। Annual Sports Day and Prize Distribution, Farewell Party, New Session 2024-25 begins. Extension Lecture, Talent Hunt for Newcomers, Hansraj Day Celebration, Mother's Day Celebration, Declaration of CBSE Board Result, various Junior Wing Activity, School Election Activity. Annual Sports Day and prize distribution was celebrated in the school premises in the month of February with great enthusiasm. Mr. Randhir Golan, MLA Pundri, and many dignitaries graced the occasion. On this special day, prizes were distributed for academic and non-academic activities for those who excelled in different spheres. School karate team brought laurels after winning gold medal in the national level. Events like basketball, volleyball, athletics, yoga participants also got medals in this function. Academic achievers also bagged prizes and beautiful trophies. Some cultural programs were held to make the day more colorful. Our chief guest showered his blessing to all present there and said that children are the future of our country. Educational institutes play a key role for the society. At the last, our school manager Dr. Subhash Tawar and school principal Mrs. Sadhna Bakshi thanked all the parents, grandparents and the guests. A farewell party was organized in the month of February for class 12th. On this occasion, Ikavan Kundya Yaj was performed for the bright future of the students. Our principal madam and staff said good luck to them for their annual board exams. A sumptuous food was also served to them. On this day, all were looking happy. New session 2024-25 of our school was begun by performing a Havan on April 8, 2024. Shri Ravindra Shastri performed the yaj by all the faculties and students. They chanted Vedic mantra. Our principal ma'am blessed the student for the beginning of new session and motivated them for their future. Students were also honored who got first, second and third position in their respective classes. Extension lectures was held at the end of April for the students of 11th and 12th to make their full concentration on study and keep them away from all the distractions. The keynote speaker was an eminent motivational speaker, Acharya Pawan from Madhya Pradesh. He inspired the student by telling ethics building, self-honesty, train the brain, planning and persistence, art of conscious listening. All the students were taking great interest and made this session interesting and interactive. Talent hunt for newcomers was held with pomp and show on 27th April 2024 in our school campus. The students took part with zeal and zest. They showed their innermost talent by showing varieties of dance, poem recitation, songs, and so on. The main objective for these states is to remove their hesitation and to bring out their innate talent and also make them adjustable in new school environment. The Prakashotsav of founder of our DAV institution was celebrated in our school with jubilant ambience. This day was celebrated nationwide. Hansraj ji was the principal of our first DAV school in Lahore. The principal ma'am also addressed to all staff and students and told about his life and teachings to be applied in their life. Our school staff also visited a national level program held at Devi Public School, Thermal Panipat under the kind guidance of Padam Shri Poonam Suri ji. Our school karate team players were also awarded on this day and got fame for our school.
To give regard and honor all the mothers of the world, Mother's Day was celebrated in our school. The students showcased their emotions and sentiments through twists and turns. Our principal, Mrs. Sadhna Bakshi Ma'am, remembered the contribution of mothers in everyone's life and also stated that having a mother is truly a blessing. सेशन 2023-24 का 10वीं और 12वीं का परिणाम शानदार रहा। गत वर्षों की तरह विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम दिया। सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम में मानवी ने 96% अंक प्राप्त करते हुए पहला स्थान हासिल किया। इसी तरह भारती ने मेडिकल स्ट्रीम में 94.8% और शैवी ने नॉन मेडिकल में 94.4%, शिवांश ने नॉन मेडिकल में 94%, वंशिका ने कॉमर्स में 93.8%, श्वेता कौशिक ने आर्ट स्ट्रीम में 93.4%, सुनिधि ने नॉन मेडिकल में 93.4%, गरिमा ने कॉमर्स में 94%, पूर्वी कपूर ने कॉमर्स में 93.2%, डिम्पी ने कॉमर्स में 93%, तनु ने आर्ट्स में 93%, सुदित्य, केशव और सपना ने मेडिकल स्ट्रीम में 91.6%, आशीष कौर ने मेडिकल में 90% और विशाखा ने नॉन मेडिकल में 90% अंक हासिल किए। इसी प्रकार कक्षा 10वीं में अंशिका ने 98.2%, कनन ने 97.8% और आस्था ने 96.6% अंक प्राप्त करते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। इस अवसर पर सभी अभिभावकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों में खुशी का माहौल था। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती साधना बख्शी जी ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ वृंदा ने 94.6%, भूमिका ने 94%, महक ने 93.2%, गुरकिरत और सक्षम ने 93%, हैरन ने 92.4%, कनिका और तृप्ति ने 92%, सृष्टि ने 91.8%, रक्षित ने 91.6%, मयंक और हर्षित ने 90.6% और दिव्यांशी ने 90.4% अंक हासिल किए। Let's move to our junior wing activity. In the outset of new session 2024-25, junior wing of our school first of all performed an welcome activity. All the students smeared tilak by the school principal and all the other educators. The students were glowing and looking charming with their happy faces. The tiny tots also welcomed by high-five, handshake and hugs. After that, Baisakhi celebration was done in our junior wing with great spark and thrill. They flaunted their beautiful attire and dance moves. The students performed bhangra and other folk dances. Other than these, tongue twist activity, thumbprint activity, family tree activity, fancy dress activity, Hindi grammar activity, fun and frolic activity, alphabet sound activity, handprint activity were also performed by the little ones in the junior wing. गत 22 मई 2024 को भारतीय लोकतंत्र का संवैधानिक पर्व मनाया गया। लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए विद्यार्थियों को चुनाव प्रक्रिया से अवगत कराने एवं प्रेरित करने के लिए विद्यार्थियों का विभिन्न पदों पर मतदान करवाया गया। विद्यार्थियों ने हेड बॉय, हेड गर्ल, स्टूडेंट काउंसिल के प्रधान, उप प्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा कक्षा 9वीं व 10वीं के कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कराया गया, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों ने अपना मतदान करते हुए इन पदों के उपयुक्त प्रतिनिधियों को चुना। चुनाव की सारी प्रक्रिया जैसे नामांकन वापस, चुनाव चिन्हों का आवंटन, प्रचार अभियान, आचार संहिता, मतदान, मतों की गिनती एवं चयनित उम्मीदवारों की घोषणा की गई। +1 मेडिकल से हेड बॉय के पद पर लक्ष्य गोलन 81 मतों से तथा
हेड गर्ल के लिए +2 आर्ट से सेजल 102 मतों से विजयी घोषित किए गए। स्टूडेंट काउंसिल के प्रधान उप प्रधान के लिए +2 कॉमर्स से विराट चौहान 178 मतों से, उप प्रधान के लिए +2 नॉन मेडिकल से भूमिका 106 मतों से, सचिव पद के लिए +2 कॉमर्स से अमनप्रीत 87 मतों से, कोषाध्यक्ष के लिए +1 कॉमर्स से खुशबू 126 मतों से विजयी घोषित हुए। इसी प्रकार कक्षा 9वीं व 10वीं से गौरव कौशिक 58 मतों से, कक्षा 10वीं से सोमेंद्र कोहली 71 मतों से कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव जीते। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती साधना बख्शी जी ने सभी चयनित उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और उन्हें अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।